today we have the Indian SUV, king of the roads, daddy of all the SUVs, Mahindra Scorpio N Z8 Select. This is the car I own right now. We just bought it 1 month back. This product is just not normal SUV. We get in 20 or 30 lakh. This is not a compact size SUV. This is a full size SUV. And the best thing about this car is you feel that you are a king on the road. You feel that you should you should not worry about the road and just go push the pedal and just go wherever you want to. We call this car a king of the road right now because the legacy it holds from the 20 years. The Scorpio, the old classic Scorpio, is holding on the road, and now this is a new gen Scorpio N is killing the Indian market of SUVs. Right now, we have a black color in front of us, which I own right now. And as you can see, the exterior is so nice. You can see on YouTube videos everywhere on the YouTube or internet. This car is killing the Indian market right now of SUVs. So let's talk about the car. The car looks very nice. The color, the black color I own looks very nice, but only the problem is high maintenance. But no worries, we got it covered. We have a Hura car wash monthly support. So we'll talk about the back of the car, rear of the car. Actually, we get zero, almost zero boot space in this car when the third row is up. You can hardly put a travel bag here. You can put plastic bags only. If you are guys are going five seats, then you can put some bags here on the third row. Other than that, there is no space. Otherwise, you have to go for roof railing and roof carrier. That is another costly option, but I don't prefer that, using that, because that will increase the drag of the car and it will decrease the mileage. Of course, you get a rear wiper here, which is very essential feature when you are driving in dirt. You need this all the time. So that's all about the trunk. So the front side of the car looks very massive and dominant. It looks like a tiger if you see properly. Of course, the headlights, it looks super awesome. If you go below this, you will get a halogen. Right now we are having a projector headlamp here, and it looks very awesome. And we get a fog lamp, we get a DRL, which looks massive when you driving at the night. It's look very nice. And also the hood is very big. Like you can clearly see that hood is almost like this, and so it's very big. You get a clear view when you are driving from the driver's seat. You get a clear view where your bonnet is touching, which helps a lot in a driving this car. What can I say about the look from the front? It looks very nice. The driver position is clearly visible, and I just love this design. That's why I bought this car, of course. Let's go on the right side. So let's get in the car from the driver's side. You get here cruise control, volume control here. The steering just goes ups and down. It doesn't come forward and backward. You get all windows, power windows. We get to set the rear mirror option. We get this is very particularly nice because we get a chrome finish door handles, which are very nice. Looks pretty luxurious on this, and we get this to hold, right? And we have clutch, accelerator, brake. I have applied some accessories on that. Although when we go inside the car, we have this instrument cluster where everything is working very properly, and the main thing is we don't have anything extra on this screen. Okay, we just have things which are bare minimum, which we need while driving. We don't need anything extra. I don't wanted controlling the AC from here. That's why I bought this model. I don't wanted anything extra. That's why I brought this, because this car, it comes with minimal technology, not too much tech, not too much robustness. It comes a proper balance of everything, not too old, not too techy, proper. And we get AC modules here, one two like this, and then we have dry mode, zip zap zoop, downhill assist, traction control, parking brake, auto start stop, and this SOS button, which can be used in emergency situations. On the upside, we have the sunglass holder. We have this button for the light, sunroof. And if you look at the sunroof, we get a very short sunroof, but this is what we need right now. We don't India is not made for sunroofs. Actually, we get rear view mirror on the co-driver side. We will go I was talking about this lumbar support before. This lumbar support is very convenient. We get a height adjustment here, and from here you can adjust the seat backward and frontward. And let's go to the rear side of the car, and here you get power windows, and this is leather, this is plastic, but this is very nice that we are getting leather, but they should have given the leather here also. And we get a proper leather seats, which are super awesome, super
comfortable, and we get a rear AC, but we don't get to control the temperature from here. And we have a pocket here, we have a cup holder here, handrest, which is very comfortable for me. And you get the best thing about the seat belts are very proper. And seat belts, if you are sitting on the last row also, and if someone has not put their seat belt on, it will show on the instrument cluster or infotainment cluster, which helps the driver to keep the safety of all the passengers. Along with this, you get this seat belt. Those are very nice. And if you see the rear sitting, we have gone almost 11 people in this car, 3 at the back, 4 on this seat, 1 on that seat, 2 on that seat. Actually, one small baby was on my father's lap, and 1 was me driving the vehicle. If you go at the back, we get this rear wiper. We get very small storage, but if we fold the seat, and then we get a storage for storing our luggage, right? So this particular model is diesel, so that's why I have applied this diesel here. You get to, and from here you can put the DEF. From here, diesel you have to put in. It's a push lock, 17-inch alloy is proper, and we get this Scorpio N badging, which looks proper. And from this side, car looks like this. Let's go and open the trunk of the car. 1 second, let me open the trunk from the driver side. uh, the trunk is too heavy, and it does not comes with hydraulics, so we have to put so much power, and it's very hard to do it with one hand. Finally I did it. And see, you can see the engine is so power. There is the turbo 2.2-liter diesel engine. This is M-Hawk engine of Mahindra, 2.2-liter turbo engine. So that's all about the engine. Too heavy actually. And so that's all about the car. And let's go inside and let's take the drive review of the car. Let's put the seat belt on. First of all, safety first, then let's start the car. I need a AC. It's too hot here right now. We are going at 35 degrees showing in the instrumental cluster, which is very hot. गाड़ी के अंदर अब हम आ चुके हैं. We are driving this vehicle right now, and we are on a speed of 50. We are in a zap mode. गाड़ी का average है अभी फिलहाल 15.9, which is good for this big size SUV, as I mentioned earlier. And we go to the 5th gear. Speed is 80 right now, and still 80-90 की speed पे, but still I have the confidence on the steering wheel that the car will get in control when if anything happens or anything comes in between, because this vehicle is having the proper stability. You can rely on this vehicle anytime at night time. And the only problem I face with this car is that auto start stop having some problem with this car. Rear camera is having some problem. It's having some glitches. और एक प्रॉब्लम अगर इस गाड़ी में बताया जाए तो ये जो हैंडल है ये पीछे के साइड पे चाहिए था, ग्रैब हैंडल, बट नहीं दिया है. इट्स ओके. बाकी कंफर्टेबल तो गाड़ी बहुत ज़्यादा है. मुझे तो ऐसा कोई इशू लगा नहीं जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मुझे लगे कि मैंने रिग्रेट किया इस गाड़ी को लेके. एवरीथिंग इज़ वर्किंग सुपर फाइन. अगर आप इसको XUV 700 से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इसमें एक्सेलरेशन कम है, पिकअप कम है. उसमें जैसे ही आप एक्सेलेटर पेडल दबाते हो गाड़ी भागने के लिए दौड़ेगी, बट ये गाड़ी वैसे नहीं है. ये गाड़ी स्मूथली पिकअप पकड़ती है और फिर ऐसे आपको जर्क नहीं लगता है, आपको स्मूथली लेके जाएगी. पॉट होल्स के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है इफ यू आर ड्राइविंग स्कॉर्पियो एंड ZX Select. Scorpio N even, because the suspension is very nice. It has a combination of 2 suspensions which are very nice. Right now we are going into the city, and as you can see, I'm sitting at very high posture that I have mentioned earlier, and it's very nice that you can see the road clearly. Every obstacle is visible clearly. You don't need to think that you don't have to do this and that, because the bonnet is clearly visible, which helps us to take the decision. राइट नाउ वी आर लिटिल बिट ऑन अ बम्पी रोड. ये वो रोड है जहाँ से हम हमारी अल्टो कभी नहीं निकालते थे. हमारे पास अल्टो भी है और हम इस रोड से कभी अल्टो से नहीं आते थे, बिल्कुल बहुत गड्ढे फील होते थे और पूरी गाड़ी का पूरा जो मेटल ऐसे बचता था. बट ये गाड़ी के साथ इसके कोई इशू नहीं है. बस सीधा निकालते जाओ, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है. द गियर इज लिटिल बिट लैगी एंड अटकते हैं थोड़े गियर, पर ठीक है. आई फील कि सेकंड गियर थोड़ा अटकता है. जब हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट करते हैं थोड़ा गियर अटकता है. उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इज वेरी स्मूथ, एंड रिवर्स गियर इज वेरी आल्सो वेरी स्मूथ. बट फर्स्ट से जब हम सेकंड जाते हैं थोड़ा सा लैग है गाड़ी में. और बम्पी रोड्स पे तो बिल्कुल आपको देखना ही नहीं है, बस चलाते जाओ आप गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा.
सब बढ़िया चलेगा। आपको बस गाड़ी का पेडल दबा के रखना है और गाड़ी निकल जाएगी स्मूथली। जहाँ पे आपके रोड सक्षम नहीं है वहाँ पे ये गाड़ी सक्षम है, जहाँ रोड्स नहीं जाते वहाँ ये गाड़ी जाती है। तो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस कार। ये हाईवे के लिए बनी ही नहीं है। आप सोचो भी मत कि हाईवे पे आप इसको 170 180 पे क्रूज करोगे, क्योंकि ये गाड़ी पलटने की डर है। ये गाड़ी पलट सकती है बिकॉज इट्स अ बॉडी ऑन फ्रेम, सॉरी लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी। इट्स मेड लाइक अ ट्रक और बस, सो बॉडी रोल काफी ज्यादा होता है इसमें, नॉट मच पर है थोड़ा सा बॉडी रोल। इफ आई टेक अ कर्व तो बॉडी रोल इतना ज्यादा फील होगा कि कंफर्टेबल नहीं है फैमिली के लिए थोड़ी सी, बट ठीक है फिर भी मतलब इट्स ओके। जिनकी फैमिली को कंफर्ट ज्यादा नहीं चाहिए बट दे वांट सम बिग साइज एसयूवी जो रोबस्ट हो, जो थोड़ा रोड पे उसका रुतबा हो, उन थोड़ा सा उनका डोमिनेंस शो हो, उनके लिए ये गाड़ी बनी है। बट इफ यू आर अ पर्सन हु आर मच इनटू टेक, जिसको फीचर्स ज्यादा पसंद है, जिसको स्पीड ज्यादा पसंद है, जिसको कंफर्ट ज्यादा पसंद है, उसके लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। ये गाड़ी बनी है ऑफ रोडर्स के लिए एंड फैमिली के लिए भी बोलूंगा, बट जिसकी फैमिली को ज्यादा कंफर्ट वगैरह पसंद नहीं है, जो एडजस्ट कर लेते हैं, उनके लिए ठीक है भाई। अदरवाइज मत लेना फैमिली के लिए, क्योंकि आपकी फैमिली आपको बाद में गाली मारेगी, जैसे हमारे फैमिली ने मारा था कि बस लेके आ गया। मेरी मम्मा ने बोला था कि ये क्या बस ले ली, इसमें तो धक्के लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आप ये गाड़ी बाय करना। बट अगर आप सोलो ट्रैवलर है मोस्ट ऑफ द टाइम और आपके साथ और एक को पैसेंजर है, द फ्रंट सीट इज एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस, द बैक सीट लिटिल बिट बम्पी, द लास्ट सीट, द लास्ट रो, आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मैं बैठूंगा पीछे की सीट पे, क्योंकि आप हमेशा टायर के ऊपर हो, तो आप बम्प करते रहोगे, आप जंप करते रहोगे, आपके सर को लगेगा और फील होगा कि उल्टी नौशिया फील हो सकता है। इसलिए बट दिस टू सीट्स आर मेड फॉर लग्जरी प्रॉपर एसी। एंड इसकी एसी काफी जोरदार है। यू डोंट नीड टू वरी कि एसी कूल नहीं कर रहा है। 2 मिनट की आप में आपका पूरा एंडिंग तक कैबिन बस ये सामने के रियर में और सामने के एसी वेंट से हो जाता है। यू डोंट नीड इवन दिस मिडल रो एसी वेंट्स टू टर्न ऑन टू गेट द कैबिन कूल्ड आउट। So AC is so powerful. मैं ये बस इतना ही कहना चाहूंगा, द प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, द सर्विस इज बैड ऑफ कोर्स बट द प्रोडक्ट इज वेरी नाइस। बट आपको रिलायबिलिटी जो होती है, जो इनोवा में मिलती है, ये नहीं मिलती यहाँ पे। आपको आपको हमेशा डर रहेगा अरे यार ये तो खराब नहीं हो गया, वो तो खराब नहीं है। जैसे ऑटो स्टार्ट शॉप मेरे तीसरे दिन खराब हो गया था, गाड़ी लेने के तीसरे दिन बाद, विच इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। बट आई डोंट नीड ऑटो स्टार्ट स्टॉप बिकॉज माई फादर ड्राइव्स इट एंड उनको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उनको समझने में कंफ्यूज होता है, तो उनके लिए तो ठीक है। तो मुझे भी नहीं चाहिए था वैसे। आई डोंट वांट, क्योंकि फिर उसके बाद एसी कंप्रेसर फिर से चालू होता है सिग्नल पे और फिर से गाड़ी को पावर लगती है, तो आई डोंट थिंक इट्स यूजफुल इन इंडिया, जहाँ पे 5-5 मिनट पे सिग्नल भी लग रहे हैं हमें। अदर देन दैट गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप रोड पे चलोगे, लोग पलट पलट के देखेंगे आपको। ब्लैक कलर हो तो और भी अच्छा है। एंड वी बॉट दिस इन 23 lakhs ऑन रोड एंड इसकी एक्स शोरूम प्राइस थी 17 lakhs, और बाकी हमने जो भी सारे टैक्स एंड ऑल कवर, वी बॉट इट फॉर 23 lakhs, विच इज very nice price for this big size of SUV as compared to the other SUVs we are getting at the 40-50 lakhs, like a Fortuner and Endeavor. Right now it's not in the Indian market, but it's soon going to come. Other than that, it's a base product. Infotainment system works properly, AC works properly, all the features, safety feature, EPS, ABS, everything is working properly. Seat belts are very comfortable, driving experience is very comfortable, steering so smooth, and what's all, I'll just love this product. So thank you for watching my video. बने रहिए मेरे साथ ऐसे दूसरे गाड़ियों के इन्फॉर्मेशन के लिए भी। आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं नेक्स्ट गाड़ी का किसका करूँ, कौन से गाड़ी का करूँ, एंड आई विल डू इट फॉर यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।